Windows Server 2012 is one of the great operating systems ever designed by Microsoft. They are not only provide you the security feature, they also provide you tons of other features. Now in this video, we are going to talk about some of the important stuff related to the installation. My name is Harshamda, and in this video, we are going to learn about remote desktop services and related management. Then we are going to talk about the switching installation modes, which is very important for examination purpose. Then we will talk about the features on demand and the minimal server interface. And in the end, we will talk about the add and remove features in offline images. Now guys, before to start into this, I want to give you a small introduction and the overview of these all things what we are going to cover in this video. And I want to remind you again, guys, you will get 4 to 5 questions from this particular chapter. So please do it or learn carefully whatever I'm going to share with you in this video. इस वीडियो में हम सबसे पहले जो हम कवर करेंगे that is the remote desktop. As you know that the remote desktop is one of the very common topic in all the operating system ever designed by Microsoft. It allows you to access and administer the remote desktop or remote server, and you can make changes whatever you want with this. According to my experience, this is one of the great way to make changes onto the server. Like if you have an enterprise and there are a lot of servers are working on, so it is quite easy that you want to connect. आपके लिए एक बहुत आसान तरीके से और वे हो जाता है. You can connect with your servers and उसके अंदर आप जो भी changes करना चाहते हैं कर सकते हैं. So इस particular वीडियो में हम इसके बारे में theoretically concept के बारे में बात नहीं करेंगे. We will directly jump into the practical. Then in the second way, we will talk about the switching installation mode. Now what is this? जैसा कि आप जानते हैं कि Windows Server 2008 में उन्होंने server core and GUI mode और it is also called the full installation mode निकाला था. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था. अगर if you want to deploy GUI mode, then you cannot go back to server core. और अगर आपका server core है तो उसमें भी कुछ complications आती थी अगर आप उसे full में convert करना चाहते हैं. और in other sense, it is almost impossible to do that. But guys, in Windows Server 2012, it is possible, and हम इस वीडियो में करेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं. In the third part, that is called the features on demand. It is really a great feature of Windows Server 2012. Now, what it does, वो करता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई particular feature या particular role नहीं चाहिए, you can remove it. I know that आप लोग यही सोच रहे होंगे कि if you really want to remove this, why don't we use add and remove roles or add and remove features? But guys, I want to tell you, अगर आप add or remove रोल्स और फीचर्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जो बाइनरीज रहती हैं उस पर्टिकुलर थिंग से रिगार्डिंग, जैसे कि अगर आप डीएनएस के बारे में बात करते हैं या नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, अगर आप ऐड रिमूव रोल्स और फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर बाइनरीज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल रहेंगी. लेकिन इस पर्टिकुलर फीचर्स को यूज करके यू कैन ऑल्सो रिमूव दैट बाइनरीज बिकॉज सम टाइम इट इज quite dangerous for any of the server. जैसे कि आपका DNS यूज नहीं हो रहा है और उसकी बाइनरीज अवेलेबल हैं, and for your information it is quite vulnerable to attack. तो ऐसा कोई चांस आपका लेना नहीं चाहता. And Windows Server 2012, as I already discussed many times, कि completely concentrate on the security part. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करेंगे. And after that we will also discuss about the minimal server interface. Now in this part, we are not going to talk about the server core. We are not going to talk about the server with full installation. यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आप एक strictly आप एक सर्वर डिजाइन करना चाहते हैं for the basic administration और उसके अलावा आपको कोई फीचर्स कोई रोल नहीं चाहिए, then how you can remove these all the stuff from the operating system that also help you to save the hard drive space. तो वो कैसे करनी है we will also do in this part. And in the end we will also going to do the practical related to the offline images.
Just like I discussed in the previous video कि Windows Server 2012 आपको एक ability provide करवाता है कि if you wanna install some of the features or you wanna remove some of the features during the installation, you can make changes into your images. And उसके बाद जैसे ही आप नेटवर्क में डिप्लॉय करेंगे, whatever the like features या roles जो आपने assign किए हैं, उसके बेस पे वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा. इट इज रियली वन ऑफ द कूल फीचर इन विंडोज सर्वर 2012. So let's get started with the first topic, that is called the remote desktop management. Now guys, for that I already have installed Windows Server 2012 for you, and I want to share with you one of the very important thing before to start with this. हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर बार Hyper-V का यूज करेंगे. Or Hyper-V is, you know that it is one of the great features of virtualization provided by Microsoft, as it is free and you can deploy n number of operating system on the same physical machine. Now guys, just imagine this is my physical machine which is running Windows Server 2012, and by default there is no Hyper-V role is installed. पहले मैं Hyper-V आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको रिमोट डेस्कटॉप के बारे में बताऊंगा, बिकॉज हम जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे Hyper-V इज वन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिकल इन दैट. एंड गाइज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, सम टाइम यू विल फेस सम ऑफ द इशू इन द Hyper-V, as I know you are using VMware products or VirtualBox products. So this particular Hyper-V demonstration will help you that how you can make Hyper-V server and how you can install the virtual machine in that. So that's what is this dedicated to. So let's get started with the Hyper-V. तो जैसे कि ये हमारा Windows Server 2012 available है, तो the first job you have to do it is create or assign 2 LAN card to this particular physical machine. तो यहाँ पर मैंने 2 LAN कार्ड बनाए हैं. One represent Hyper-V LAN and another represent only LAN. तो पॉइंट क्या है, इन Windows Server 2012 अगर आप Hyper-V इंस्टॉल करना चाहते हैं, so it is always recommended that you should have 2 LAN कार्ड, because एक LAN कार्ड डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा Hyper-V से. So that's what in this video we are going to do. तो यहाँ पर जो Hyper-V LAN है, हम इस LAN कार्ड को कम्युनिकेट करेंगे Hyper-V से कनेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए. Now the second step, guys, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं. जैसे कि आप इंस्टॉलेशन करना चाहेंगे Hyper-V के रोल का, और वो ये बोलेगा कि Hyper-V is already running. अगर आप VMware 9 यूज कर रहे हैं, that is a VMware 9 Workstation, और या फिर आप VMware जो प्लेयर है आप वो यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कॉमन है. नाउ हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं एक छोटा सा वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं, बट इफ यू not about to get it that how you can do that, so please go to the description and you can find out how you can solve the issue. So let me go to my physical machine and मैं आपको शो करता हूँ, that is my Windows 8, जहाँ पर मेरा VMware Workstation installed है और आपको क्या करना है वहाँ पर. So guys, सबसे पहले आपको VMware Workstation में जाना है, I mean जहाँ पर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने इंस्टॉल किया है, और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने Windows Server 2012 इंस्टॉल किया हुआ है. तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया है in my computer, then D drive, VMware job done, YouTube videos environment and Windows Server 2012. That is my DC machine 1. और यहाँ पर आपको चूज करना है VMX file which is here, और make sure आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows Server 2012 वो शट डाउन होना चाहिए, वो रनिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए. अभी मेरा है because I'm just trying to show you कि क्या करना है आपको. इस फाइल में जाके राइट क्लिक कीजिए and then you have to open with the notepad. Okay, don't make it default, just for one time you have to select notepad. Just open कीजिए and go to the end of the place, means जो आपकी इसमें जो भी फाइल होगा उसको एंड में जाइए, और यहाँ पर एंड में जहां पर आपका लास्ट में दिख रहा है वहां पर आपको 2 लाइनें ऐड करनी है. One is this hypervisor.cpuid.v0 equal to inverted commas false inverted comma close, and for the same one in another line mce.enable is equal to inverted comma starts
ट्रू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे आप इसे सेव मतलब आप राइट करेंगे या कॉपी पेस्ट या जो भी आप जैसे भी आप करेंगे, जस्ट सेव दिस फाइल एंड सेव करने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाइएगा। एंड नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीथिंग इज रेडी टू वर्क इन दिस। तो उसके बाद जैसे ही आप ये स्टेप कर लेते हैं, नाउ जस्ट गो बैक टू योर मेन सर्वर मैनेजर एंड यहां पर जाकर आपको जाना है add roles and features, as we are trying to install Hyper-V role on this machine. So just click on this. Click करने के बाद just click on next, and as it is the basic or just the overview of this, then आप कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, as it is already pre defined और आप easily समझ पाएंगे. We want to install the role right now. So select the role-based or feature-based installation. Click next. Now, right now, I only have one PC or machine, that is my lab DC1, जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं. So that's what on which I am going to install my Hyper-V role. So यहाँ पर click कीजिए next, and after that click on Hyper-V here. And उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि you also want to install some of the additional features for Hyper-V. Definitely we want to install all the features which is related to Hyper-V. So click on add features, and once you click on add features, it will not give you any error here. लेकिन guys, अगर आप जो मैंने अभी आपको स्टेप बताया VMware Workstation का, अगर आप वो नहीं करेंगे तो definitely यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देगा. So once you select Hyper-V, just click on next. यहां पर बाय डिफॉल्ट मैं कोई फीचर्स या कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करूंगा. एवरीथिंग इज गुड टू गो फॉर मी. सो जस्ट क्लिक नेक्स्ट हियर, एंड उसके बाद यहां पर एक जस्ट ओवरव्यू है दैट व्हाट इज Hyper-V. इट अलाउज यू टू वर्चुअलाइज योर सर्वर वर्कलोड्स बाय रनिंग दोज वर्कलोड्स ऑन द वर्चुअल मशीन्स, व्हिच इज रियली गुड, एंड आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर, एंड यहां पर आपको चूज करना है कि कौन सा पर्टिकुलर कार्ड डेडिकेटेडली आप चूज करना चाहते हैं फॉर द कम्युनिकेशन विद Hyper-V. सो यहां पर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं Hyper-V. सिलेक्ट दैट, देन क्लिक नेक्स्ट, एंड यहां पर आपके पास कुछ ऑप्शन है दैट इज वर्चुअल मशीन माइग्रेशन. गाइज, जस्ट वांट टू टेल यू दैट this option you can also configure later, but for right now I'm not going to choose any one of them. Now maybe you are thinking why you should use this option. ये हमारा कुछ जैसे अगर आपके नेटवर्क में एडवांस लेवल पे कुछ क्लस्टरिंग है या फिर फेल ओवर क्लस्टर्स आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, एंड दैट क्लस्टर यू वांना attach with one of the virtual machine which is running on Hyper-V, at that time you have to use this option. But for right now we are not going to choose any one of it, but in the future videos I will definitely demonstrate that how you can use this feature into the failover clustering as well. So यहाँ पर कोई भी जो ऑप्शन चूज नहीं करूंगा. जस्ट क्लिक नेक्स्ट हियर, एंड या दिस इज द डिफॉल्ट लोकेशन for the virtual hard drive and the virtual machine configuration files. So no need to change. I'm perfectly fine with this. Just click next. And in the end, we are almost good to go. And make sure you should choose the restart the destination server automatically if required, because ये option आपका choose करेगा अगर आपकी ये configuration के बाद restart की requirement है तो ये automatically आपके लिए कर देगा. So it is and good option that you can choose this one. So just choose this and click yes, and finally click on install to install the Hyper-V. उसके बाद जब ये Hyper-V install हो जाएगा, then I'm going to share with you that how you can enable the remote desktop connections on both Windows Server 2012 with full installation and Windows Server 2012 with core installation. Now guys, ये जो आपका Hyper-V इंस्टॉल हो रहा है, इसके बीच में मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं. Once it is installed, we just need to go to Hyper-V Manager, and just like we always like to install the Windows Server 2012 in VirtualBox or in VMware, with the same way you have to install two machines in your Hyper-V. One, Windows Server 2012 with full, or it is also called the GUI, and another one is Windows Server 2012 with server core.
बिकॉज बाद में हम इसके बीच में सीखेंगे कि हाउ यू कैन स्विच इन बिटवीन दीज टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे दैट हाउ यू कैन इनेबल द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस फॉर better remote management system. So right now it is almost done. The feature is installed, and now it is restarting and is updating all the Windows features related to Hyper-V. Now guys, I will just come back once this feature will be installed. So guys, मेरी जो मशीन है वो रीस्टार्ट हो गई है, एंड इस ड्यूरिंग दिस रीस्टार्ट मैंने क्या किया है, इसके ऊपर मैंने अपना विंडोज सर्वर 2012 की जो ISO है वो मैंने कॉपी किया. उसके बाद मैंने both server core and GUI जो Windows Server 2012 के लिए है मैंने already install कर लिया है इसके अंदर, because now I just want to share with you that after you install the Hyper-V, then how you can manage it with Hyper-V, and of course I'm going to show you that how you can enable the remote desktop connection in both of the operating systems. So let's jump into Windows Server 2012. एंड उससे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि व्हेन यू क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉल्ड Hyper-V. जैसे ही आपका रोल इंस्टॉल हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू गो इनटू द Hyper-V मैनेजर, एंड वहां पर आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने हैं. मैं आपको यहां पर एक छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे आप Hyper-V मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अंदर. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक बात याद रखनी है उसके अंदर कि जैसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास मल्टीपल आपके पास पार्टीशंस अवेलेबल होना चाहिए. जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है इट इज फुल, दैट इज फॉर विंडोज सर्वर 2012, और यहां पर मेरा सर्वर कोर के लिए अवेलेबल है पार्टीशन जो मैंने 10 GB के बना रखे हैं. अगर आप ये नहीं बनाएंगे, इट वॉन्ट अलाउ यू टू इंस्टॉल any of the virtual machine on the same drive in which you have installed your system operating system. तो एक ये सबसे पहली बात याद रखनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, when you click on Hyper-V, यहां पर Hyper-V installed है lab DC1 के ऊपर, तो आप यहां पर राइट क्लिक कर सकते हैं and just go to Hyper-V manager. Or also you can use another option, that is just go to tools, एंड टूल्स में जाकर यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं Hyper-V. बोथ आर सेम ऑप्शन. जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरी दो मशीन्स ऑलरेडी रनिंग है, कोर एंड फुल. दिस इज माय कोर विद 512 MB ऑफ रैम एंड 512 MB ऑफ रैम विद द सेम फॉर द फुल. तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. उसके बाद कैसे मैंने ये क्रिएट की, मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं आपको, लिटिल बिट फास्ट. सो आई जस्ट क्लिक ऑन न्यू. उसके बाद यहां पर जैसे वर्चुअल मशीन आप VMware और वर्चुअल बॉक्स में करते हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, द सेम वे जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. उसके बाद क्लिक नेक्स्ट. कोई भी नाम देना चाहते हैं, कहां पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. क्लिक नेक्स्ट. हाउ मच मेमोरी और द रैम यू वांट टू गिव, क्लिक नेक्स्ट. आपका जो लैंड कार्ड है, ऑफ कोर्स मैंने यहां पर जैसे ही Hyper-V मैंने इंस्टॉल किया, उसके साथ साथ इसने एक लैंड कार्ड ऑटोमेटिकली यहां पर मेरे लिए बना दिया है ऑन माय रियल मशीन. सो जैसे ही आप देखेंगे कि ऑन माय फिजिकल मशीन यहां पर एक आपका लैंड कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्विच फॉर Hyper-V. मैं Hyper-V के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा इन डिटेल, बट राइट नाउ just want to give you the basic idea of Hyper-V configuration. So click on this option, which is the by default option coming here. So next करने के बाद यहाँ पर कोई जो भी आप नाम देना चाहते हैं, कहाँ लोकेशन है, उसके बाद आपका installation media means if you have a DVD in your like DVD-ROM, so you can put it here, or you can choose the ISO. So in my case, I just choose the ISO, and once you do that, click next and finish. जैसे आप करेंगे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा. बाकी के प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है. नाउ गाइस, सबसे पहली चीज कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, जैसे आपको पता है कि इट इज अलाउ यू टू एक्सेस एंड एडमिनिस्टर ऑल द रिमोट मशीन्स. सो कैसे आप इसे कॉन्फ़िगर करेंगे? फर्स्ट लेट मी डिस्कस विद यू ऑन माय GUI, बिकॉज GUI में रिमोट मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है. सो अगर आप इस पर्टिकुलर Hyper-V में जो वर्चुअल मशीन है उसको एक्सेस करना चाहते हो, क्लिक ऑन स्टार्ट, and after that click on connect. Once you click on connect, it will show you the screen in which you can easily see all the settings related to this.
So right now, I just want to tell you the remote desktop connection is not enabled by default, but the yes, service, or you can say the remote management is enabled. So how you can enable it, just go to the local server. जैसे ही आप local server पे connect करेंगे, then automatically it will show you all the configuration related to this particular local server कि IP address क्या है, computer name क्या है, और भी जो other settings है, कौन कौन से options available हैं. Yeah, it is really good, guys. It is not responding right now because according to my memory, I guess. So we have to, I guess, wait for a little bit time until this respond to us. Please, Microsoft, don't do that. Please come a little bit fast. Our viewers are waiting. Wow, great. So that's what I love about Windows. It is not responding, and it will show me just not responding. Now you have to wait, you have to keep patience in this. Let me do one thing, guys. Let me pause the video, and once it is finished, I mean it is responding to us, I'll come back and I'll show you the next step, what you have to do here. Alright guys, now my Windows Server 2012 responding me, and now as you can see, once I click on local server पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं अभी. So as you can see, the by default the remote management is enabled. Once you click on this, I just want to show you that remote management is enabled. If you want to disable that, of course you can do that, but it is not a good idea right now. So right now just click on remote desktop option here. You can see it is by default disabled. Just click on this. And of course, just like in Windows Server 2008 or in Windows 7 or in Windows 8, जो option है same यहाँ पर आपको मिलेगा. Just click on allow remote connection to the computer. Click on OK. And of course, you can assign some of the user if it is running the Windows domain environment or the domain network. But right now, मेरे साथ कोई भी domain network अभी currently available नहीं है. So मैं यहाँ पर everyone option दूंगा. Guys, remember that it is not at all a good option in your production environment. If you are running an enterprise, please never ever give this user permission to this particular remote connection. You only have to give a specific user who have the specific role in the organization, who can, or you can say he is the person who is authorized to do the changes or to make the changes according to his role. You have to assign that permissions only. So just for the testing purpose, because right now we are running some training sessions, so that's why I recommend for you, just to testing purpose, I recommend you to use everyone here. So click OK, and once you click OK, finalize, just apply, and finally we enable remote desktop connection on this GUI based server. So now how you can test this old stuff? So let me go back to my main Windows Server 2012 machine, which is here, and let me type MSTSC, that is Microsoft Terminal Services Connection. Just click on OK. Then type the IP address of the machine, and my IP address of that Windows Server 2012 is 10.10.10.200, and make sure you have configured some of the good option just for you if you like to make changes into that. Just like I always like to use the LAN 10 Mbps or the higher speed for, because I want all kind of gestures or all kind of desktop composition, means somebody put the wallpaper or anything like that. I want to do it all, and other stuff, if you want to do it, you want to use it, do it, or if you don't want, you can not choose that option. So right now here you can give the administrator username and just try to connect from here. And if it is connected properly, yeah, it will show me the prompt. Password, just OK. And once it is connected, a certificate comes for the better security, or you can say the secure communication with remote desktop. Just press OK. And yes, we are connected with 10.10.10.200 operating system, which is running in Hyper-V, and you can test it like in your production environment. This is the only way you can connect with your servers and make changes according to the company requirement. I guess you do not feel any issue, any problem or any difficulty into this particular part, because it is quite easy
to do that, just you need to enable the remote desktop connection in GUI of Windows Server 2012. So that is okay, guys. This is our 10.10.10.200 operating system, which is our, you can say, the GUI. But how about the server core? How you can enable the remote desktop connection or the remote administration into this. So let's get into this and try to learn how you can do it in this. So I'm going to connect with this server core machine. Just click on connect. And yes, we are here. We are inside the server core because मैंने पहले ही login कर लिया था with the password. Now the first step, and I also hope that you remember that how to give the static IP address on the Windows machine by using command prompt. So if you don't know, so please check this command because this command will help you to do it. The command is netsh, that is network share. Then after that you have to use interface, then IPv4. IPv4 के बाद आपको set address, जो आपको address set करना है, और एड्रेस सेट किसके ऊपर करना है, आपको यहाँ पर लैंड कार्ड का नाम देना है. जैसे कि हमारा विंडोज सर्वर 2008 के अंदर होता था लोकल एरिया कनेक्शन, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विंडोज सर्वर 2012 में उसका नाम अभी इथरनेट हो गया है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, और इफ यू डोंट नो जस्ट टाइप ipconfig/all and you can find out the name of the adapter if you don't know. So you can choose your Ethernet option, and after that you have to type static, the IP address, and जो भी IP address आप देना चाहते हैं, you can give it to this. Now I want to give 199, and after that the subnet mask. So जैसे आप देंगे press enter, done. IP address done. So how you can check that, just type ipconfig command and press enter, and you can see the IP address is set now on this machine. Now guys, the next step into this to check whether remote management or remote desktop is enabled or not. So how to check that? So the first thing, you have to go to your main C drive, that is here, then of course Windows and /system32. You have to go into this particular location first, and उसके बाद हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट अवेलेबल होती है रिलेटेड टू विंडोज होस्ट स्क्रिप्ट्स, तो हम उन्हें रन करके देखेंगे. एंड द कमांड इज regedit.wsf space ar space I. Now what is the meaning of that? इसमें ये है कि हमारी कुछ स्क्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है इन द लोकेशन ऑफ system32 इन विंडोज डायरेक्टरी, एंड उसके अंदर हमारे पास एक स्क्रिप्ट है दैट इज regedit.wsf space AR because it is related to remote management, and I means I want to check that, oh sorry, not I, we, verbose, I want to check whether it is enabled or disabled. If you will see 1 in the result, that means it is disabled. As you can see here, the 1 option, that means it is disabled. But if you can see 0 here, it means enabled. The remote desktop is enabled on this. Now how you can enable a remote desktop now? Just type the same command, only type 0 after /AR, and once you press enter, done. Registry has been updated. Now let's check again with -/v, and you can see now it is 0. So that means our remote desktop is enabled. Now let's check this remote desktop connection from my Windows Server 2012 machine. Again the same mstsc, type the IP address, that is 199, and I want to experience, actually there is no GUI but I still want to experience with the LAN. See how much mean I am. So just click on connect here, and once it is connected, yes, it will ask you, it will prompt you for a username and the password. Administrator is the username and the password is here. Just click OK, certificate, accept that, and yes, we are connected with server core. And make sure guys,
आई गेस कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि अगर वो सर्वर कोर है तो क्या मुझे वहां पर GUI का रिमोट डेस्कटॉप या रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा? So here's the result. No, you will not get any of the GUI administration into the server core, as it is only installed with the core services. There is no GUI available in this. So guys, in this part, we just got to know that how we can enable the remote desktop and how we can access it from another operating system. Let's jump into another option and let's try to understand rest of the options in this video. Windows Server 2012 really enables some of the great features, and now we are going to talk about the switching between installation mode. Guys, let's say you are in some kind of meetings and there are a lot of administrators are there and most of them are experienced. As I discussed with you that most of the experienced administrators likes to use server core because according to them server core बहुत ही एक अच्छा platform है that will almost secure as compared to GUI mode, and they always like to play around with the commands. Now imagine you are in that kind of meetings and they are talking about some of the commands, some of the configuration, scripting or sort of thing, and you just like, what? What you are talking about? I don't know anything about it. Because guys, I can understand that we administrators, especially the Microsoft ones, have some kind of habits to use the GUI mode always in the Microsoft servers, and that is the main reason that Microsoft really think about in Windows Server 2012, क्योंकि Windows Server 2008 में ऐसे situations में administrator कुछ नहीं कर सकता था. If he is using server core, he only have to play in server core. There is no such option that you can change or switch from server core to any kind of GUI mode. But the first time ever, at least from Windows Server 2008, Microsoft provides some of the feature in Windows Server 2012 that you can make changes your server core installation to the full GUI installation. And if you want to change from full GUI installation to server core, that also you can perform. Now in this particular demonstration, I'm going to show you that how you can do that. But before to start with that, let's talk about the first option, which is called switch from server core to the full installation for Windows Server 2012. Guys, you can perform this task by so many options, or you can say the tools available in Windows. Just like in the first is DISM. It is also called the Deployment Images Servicing and Management Tool, which is quite famous tool in the image X concept. I hope you remember कि Windows 7 में हमारे पास कुछ हमें जो ISOs या फिर जो images deploy करनी होती हैं उस टाइम के ऊपर हमने DISM tool use किया है, as I hope, because I never ever done this videos for you, but I hope you see this kind of thing. Also, you can do this kind of option by using remote server manager. By using server manager, you can perform this task. You just need to add or remove the roles as per requirement. And of course, by PowerShell. In PowerShell, you have some install Windows feature option. That's kind of command you have to use. So by using that, you can install such features that can enable your like a full installation from server core. But make sure guys, before to get into this, I want to share with you one thing for the exam perspective. If you want to configure server code, I want to tell you one thing. You have to be very good in server code for the exam perspective. And of course, you should know very well about PowerShell and of course, remote service administration tools as well, जो कि बहुत सारे available हैं हमारे लिए. So this is just for exam perspective. Now let's jump into server core and let's check how you can do and how you can perform this option in real. So for that guys, I installed already a server core for you. Just like you can see right now, a server core operating system is available. And the first thing you have to do one thing in this one, you have to go to PowerShell option. Once you type PowerShell, it will allow you to take to the PowerShell option, as you can see here. Now, जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं, उसके बाद आपको कमांड जो यूज करनी है, सबसे पहले वो यूज करनी है
it is called module command. This is called import module, because यहाँ पर हम जो करने वाले हैं, जो भी प्रोसेस करने वाले हैं, it is related to server manager. तो ये हमारी पहली कमांड है. Once you press enter, the command finish. After that, now you are ready to install Windows features. तो Windows feature यहाँ पर जो हमने इंस्टॉल करने हैं, सबसे पहले जो हमने इंस्टॉल करना है वो करना है सर्वर GUI. यहाँ पर एक बात याद रखना, सम टाइम जो है यहाँ पर, जैसे कि आपका GUI मैंने G छोटा लिखा है, सम टाइम इट इज केस सेंसिटिव. तो जैसे ये लिखी है ऐसी, आप वैसे ही कमांड यूज करें तो दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. कॉमा हियर, देन स्पेस. उसके बाद जो सेकंड मैंने इंस्टॉल करना है यहाँ पर फीचर, वो यू करना है GUI शेल. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपको क्या करना है, रीस्टार्ट. जैसे ही आपके दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं. गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो फीचर्स ऑन डिमांड, एक्चुअली मैं अभी करने वाला हूं इसके बाद, लेकिन जस्ट एक आपके आइडिया के लिए, यहां पर बाइनरीज अवेलेबल हैं. ये सर्वर GUI मैनेजमेंट इंफ्रा, या फिर जो दूसरा फीचर है सर्वर GUI शेल, इनकी बाइनरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहां पर मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है. अगर आप इनकी बाइनरी भी डिलीट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑन डिमांड. यू जस्ट नीड टू टाइप रिमूव हियर. वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा सारी बाइनरीज. बट राइट नाउ मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट करना है इन सर्वर the GUI, so that's why I'm not going to use that command. So just press enter here, and automatically what it will do, it will take some time. Jitna mera experience hai, almost it will take 4 to 5 minutes, and sometime 10 minutes also. तो ये पूरा प्रोसेस करेगा. तो जितने भी बाइनरीज अवेलेबल हैं फॉर द GUI, वो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल कर देगा. एंड आफ्टर दैट इट विल रीस्टार्ट, एंड वंस इट इज रीस्टार्ट, आपके सामने GUI मोड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. सो आई गेस देयर इज नॉट अ बिग डील नाउ इन Windows Server 2012 to convert from a server core to the GUI for the time being. And guys, for your information, I will also going to show you that if you are running this server core in GUI mode, now how you can do it, or how you can go back to server core from the full GUI installation. So let's wait for to finish this, and once it is restart, I will come back and I will show you that it is running with the full GUI. Then later I will also going to confirm that yes, it is running from the old to the new server core. So let me pause the video here. Once it is finished, I will come back and I will show you the remaining part. Welcome back guys. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक रीस्टार्ट के बाद आपका सर्वर कोड GUI में कन्वर्ट हो गया है. एंड आई वांट टू टेल यू दैट वाज स्टक ऑन 68%. 68% के बाद इवन मैंने क्या किया कि बाहर जाकर मैकडोनल्ड में गया, बर्गर लेके आया, वो खाया. तब जब वापस आके देखा तो देखा कि हाँ अभी रीस्टार्ट हुआ है रिसेंटली. तो इट विल टेक इवन नॉट ओनली 10 minutes, it almost take I guess 45 minutes. For you it's just a fraction of second, but for me it's kind of hours. So no problem. Just want to tell you that once you type that command, उसके बाद आपका PC restart होगा, and उसके बाद आपके सामने GUI में ये चीज convert हो जाएगी. So now let's talk about something else now guys. That is the switching between full to the core. That is our second point here, कि कैसे आप switch करेंगे कि as a from a full to the core. So for that reason, first thing I want to tell you कि जैसे कि आपका full server install हो जाता है, तो you need to just configure a little bit into add and remove feature. उसके बाद everything is good to go. So you can easily switch now in Windows Server 2012 from server full to the server core. And of course you can enjoy the benefits of the core. That is it provides you minimal interface to interact, and of course because of that the vulnerabilities and all kind of attacks are automatically will become less, because वो उसके साथ compromise नहीं कर पाते हैं. So let's get a jump into our GUI mode and let's check it out then how you can change from a full server to a server core. It's very easy guys. Just you need to go to the add remove features, and in the add remove feature, once you click next, go to in the role based and the feature based. That's great. Just click next, select your server or domain,
and we are not going to change anything into the server role. Just go to the next option and go to the features, and जैसे ही आप features पे जाएंगे यहाँ पर एक option available होगा आपके सामने, and yeah, it is here, the user interfaces and the infrastructure. As you can see, by default यहाँ पर ये आपको allow नहीं करने दे रहा है, because we only select add, the option means add roles. So you have to go to the remove roles, which is very bad over here. Just remove roles and features, and now it allows you to delete this feature from this very operating system. Click here, remove these both options, and yes, it also removed the server graphical shell and of course Windows PowerShell ISE. Now the ISE is recognized of course by the PowerShell, लेकिन उसमें क्या होता है कि sometime you are running some kind of commands and PowerShell में वो आपको एक graphical base पे आपको choose करने का option देता है by using mouse. So by this option you are also removing that kind of option. So that's what it is. So click on the remove features, and of course it will also remove this, and just click next, and of course just click remove. Once you do that, it will take a little bit time again. Of course, I guess it will take more than 10 minutes. And once it is finished, then it will automatically convert into server core. And that's what we are trying to do in this particular video. I hope you get it. And but not only that, I want to share with you one more options here, that I create one document for you. In this, you can find out that what are the other available tools that can perform the same kind of task here. So guys, आपके लिए यहाँ पर options है, like you can switching the install mode. मैंने functions mention किए हैं, उसके साथ साथ मैंने cmd lets means commands भी लिखी हैं. Now we just saw these things, like यहाँ पर मैंने ये आपको दिखाया कि how you can perform this task, or I mean from this also, this I also just show you. But now there are other tools like DISM, तो उसके साथ आप कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो आने वाले मैंने ऑप्शंस हैं उसके लिए भी मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं जो आपको मिनिमल सर्वर इंटरफेस देती है. दैट मीन्स बहुत सारे जो GUI रिलेटेड फीचर्स हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और मीन्स सर्वर से वो डिलीट कर देंगी. द सेम थिंग फ्रॉम फुल to core, how you can do that, you can uninstall these kind of features, which is the commands available here. So if you want to write down these commands, because some of the system administrator definitely required this kind of commands during their implementation of Windows Server 2012. So better what you can do here, you can pause the video and you can write down all the commands or the function definitely which is related to the very important part of the Windows Server 2012. So guys, that will be all for this switching installation mode. Let's jump into the next topic and try to learn that what else available in Windows Server 2012. All right, folks, we are on the next feature, that is called the features on demand in Windows Server 2012. Now, what it does exactly for you. Guys, इसके थ्रू आप पर्टिकुलर जो भी पेलोड्स या जो बाइनरीज फाइल्स अवेलेबल होती हैं जो आपका हार्ड ड्राइव स्पेस कंज्यूम करती हैं, आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? नाउ जस्ट इमेजिन यू आर वर्किंग इन द एंटरप्राइज नेटवर्क एंड वहां पर आपने एक ब्रांच ऑफिस ओपन की है जस्ट नियर बाय, एंड ऑन दैट ब्रांच ऑफिस you just want to install very rare features like desktop experience, that to be all. And of course it is a member server, so you don't require additional roles, like you don't want network access protection, you don't want Active Directory lightweight services, you don't want Active Directory certificate services, DNS नहीं चाहिए आपको, DHCP नहीं चाहिए, terminal services नहीं चाहिए. मतलब आपको जो binaries या जो features नहीं चाहिए, the features on demand allows you to remove that. Now, what are the advantage with that? You can easily slim down your footprint of core installation or the full installation for Windows Server 2012. The meaning is it will remove the space by deleting all these unused binaries from the particular operating system, and that is a main advantage for this. You can remove so many things, like you can remove the binaries. The Microsoft called it as a payload, which are by default available on the hard drive, or you can say the drive in which you have installed the operating system or the system location.
The second thing, you can remove the unused binaries which are definitely you are not working on, you are not used in. One thing I want to tell you guys, you can make them back again if you want. अगर आपको वापस से वो सारी binaries चाहिए, आप कर सकते हैं. There are two possible way for to do that. The first option is Windows Update Services. The WSUS or the Windows Update Services definitely can do it for you, but you can just imagine the size of the binaries. It definitely will be in the GBs. तो time consume आपका काफी ज़्यादा होगा. The second and the best option which I know, that is the sources.vim file. Do you remember the imaging configuration or the Windows deployment? That time we need to use the source.vim file because all the by default binaries are available into that location. Just mount it and properly you can install it by that way. So that is the best option which I know. And there are two methods that you can perform this task. I mean to say, you can perform in two different ways. The number one in the method is the PowerShell. That means the current running operating system. You can do that by using the PowerShell because the command is the same. Don't worry about that. And not only that, it also works on the VHD. मतलब आपके रियल ऑपरेटिंग के साथ साथ वो आपकी VHD फाइल्स जो भी अवेलेबल हैं, जैसे हम हाइपर वी यूज कर रहे हैं या हम वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं, जो उनकी हार्ड ड्राइव होती है, दैट विल बी डेफिनेटली इन .vhd. Because I want to talk about this VHD a little bit more here, guys. Actually, VHD है क्या? It's a kind of virtual hard drive for that operating system, and what it actually doing, ये full बना रही है मतलब आपके operating system को, because you know that the operating system are really running on the current real hard drives where the splitters are there and tracks, sectors are there and data stored on that all. But exactly VHD is nothing but just a file. So exactly ये file आपकी available होती है, these all the operating system which you are trying to install on the Hyper-V or the virtualization environment. So that's why the features on demand method is exactly work on this kind of situation as well. So let's try and let's go to our Windows Server 2012 and let's see what you have to do. Guys, for your information, just want to show you, this is my Hyper-V, and as you know कि जो मैंने वीडियो आपकी मतलब in the starting जो मैंने अभी वीडियो स्टार्ट की थी, तब मैंने ये आपको दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए थे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ हैं. And I want to show you the by default location available for this operating system in VMware is like go to settings, and यहाँ पर आप जाके देखेंगे हार्ड ड्राइव में, तो यहाँ पर वर्चुअल हार्ड डिस्क का पाथ अवेलेबल होगा. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द कंप्लीट पाथ वेयर योर VHDX फाइल इज अवेलेबल. एक्चुअली जो Windows 2008 यूज करते हैं या Windows 7 यूज करते हैं, तो वहां पर इट विल क्रिएट VHD फाइल, बट इन Windows Server 2012 वो यहाँ पर VHDX फाइल बना रही है, बट वी डोंट नीड टू केयर मच अबाउट इट. So let's try to see in real in which location it is available. So let me go to my computer, E drive. So यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि Windows Server 2012 full available है, और यहाँ पर मेरी वर्चुअल हार्ड ड्राइव है, दैट इज द नेम इज Windows Server 2012-full. सो मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एज दिस इज अ VHD फाइल एंड ये ऑफ है, दैट मीन्स एज यू कैन सी ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट रनिंग एंड इट इज इन द ऑफ स्टेट. मैं इसमें से कुछ फीचर्स रिमूव करना चाहता हूं. So what you have to do, you have to run your PowerShell as a administrator, and I already run that. And वहां पर मैंने ये कमांड यूज की है, as you can see right now, this is uninstall Windows feature. कौन से फीचर मैं uninstall करने वाला हूं? From GPMC, means Group Policy Management Console, one of the good tool in Microsoft. We will talk about this in the future videos, but not now. And मैं क्या करने वाला हूं? I'm trying to remove it from a VHD, not from my real operating system. And the VHD location is E drive / Windows Server 2012-full, Windows Server full, then virtual hard drive, Windows Server 2012-full.vhdx. And उसके बाद, as you know, I use the command called -remove, and मैंने आपको अभी बताया था कि जहां जहां पर भी आप remove देखेंगे, that means we are talking about the
features on demand option. As you can see, it is successfully finished and there is no requirement for the restart. It is finished. And what we deleted actually, or what we removed the binaries from this VHD, that is a group policy management. So it is quite easy to do that. If you want to install it again, just you need to change the word here, install dash Windows feature, बाकी सब same command है, and do not use this one, and automatically वो आपका install कर देगा features if you want to do it. So that's what my meaning is here. So guys, I don't think so any problem in that. Now let's go back to our file, and in this one we will talk about the next option is called minimal server interface. The minimal server interface also allows you to remove all the unused item from your Windows server machine. That is really very handy and really very good, especially when you talk about the hard drive space. अगर आपका एक सर्वर चल रहा है और वहां पर आप बहुत सारी चीजें यूज, दैट मीन्स रोल्स और फीचर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, so you can easily remove it by using the minimal server interface option. That will call the another way to save your hard drive space, and of course it will also reducing your patching. Now what's the meaning of patching here? Guys, आपको पता है जितना कम आपका इंटरफेस और इंटरेक्शन रहेगा, मतलब आपका जो UI रहेगा, यूजर इंटरफेस, उतने ही कम आपको पैचेस एनरोल करने पड़ेंगे. तो डेफिनेटली इट रिड्यूसेस ऑल काइंड ऑफ like, you know, effect, or it will also help you to mitigate against those kind of serious attacks on the organization. But you have to compromise in between this core and full, because जैसे ही आप इसे option को use करेंगे, the minimal server interface, it will remove your desktop, मतलब जो भी आपके desktop पे आता है, it will remove that. It will remove your start screen. The start screen is nothing but the charm where it is also called the start menu, वो आपका remove कर देगा. And after that it will also remove your Windows Explorer, जहां से आप अभी जैसे मैंने आपको क्लिक करके वो लोकेशन दिखाई थी, it will completely remove that. And folks, forget about all the movies, all the Facebook and all kind of YouTube stuff, because it will also remove the Internet Explorer from that. Definitely you can install like other browsers as well, but I'm talking about in the default case. You are working in the enterprise, and definitely nobody allows you to install third-party browsers and all, you know that. But yes, as an administrator, you require server manager. You will get it. It will also provide you MMC, that is Microsoft Management Console, and the snap-in in which you can configure Active Directory services, group policy management and all that. Definitely that all the stuffs will be available, and उसके साथ साथ control panels के भी कुछ options available रहेंगे definitely. Now how you can perform that? There are two ways you can configure this. One way is server manager and another way is PowerShell. मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा, because मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी सिचुएशन में आपके सामने सर्वर आए. Maybe you are working on server core or maybe you are working on GUI. So you should know both the things. And after that, I will also tell you that how to adding to core requires source file from Windows Update or Media. Means अगर आप कुछ चीजें बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं, you can install it by the sources, which is you can download it from your Windows Update location, or the media that is called the sources.vim. You can do it if the binaries are disabled, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था. Now let's go back to Windows Server 2012. And first let me show you by a server manager that from where you can see these options. So guys, in the server manager, just need to go to add or remove. Better you go to remove roles and features. And यहाँ पर जब when you click on next, of course on the local server just next, and यहाँ पर roles में हमें कुछ नहीं करना है. When you go here in the go to the same UI option that is called user interface and infrastructure. Now in this one you just need to remove server graphical shell. Do not remove graphical management tool. Why? Because at is exactly nothing but the minimal server interface, because इसके बाद ना तो ये server core रहेगा और ना ही ये full GUI रहेगा. It is just relies in between these two, server core and full server.
So this is the one way you can do it pretty easy. Just next, and उसके बाद just you need to restart. Better you should click on restart here and remove. आपका restart होगा, and restart होने के बाद आपको कुछ just server manager दिखाएगा और आपका जो command prompt जो भी रहता है वो दिखाएगा. That's it, nothing else. But you can perform this task by one more way as well. That is, of course, you can go to PowerShell, run as an administrator, and of course I will clear here. Then you have to type the command uninstall Windows feature. I like to use tab for that, and just you need to type server GUI and उसके बाद shell. That's it. जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, it will ask you to restart. You just need to restart once it is uninstalling these all the shell related features from this particular operating system. जैसे ही ये फिनिश होगा, just you need to restart. बस आपको restart करना है, और restart करने के बाद you just can see only server manager option, जहां पर आप अपनी active directory, because MMC console is available for you, आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आपको जस्ट एक CMD मिलेगा. दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको. सो लेट्स सी, जस्ट वेट फॉर दिस टू फिनिश एंड देन आई विल रीस्टार्ट दिस PC, एंड जैसे ही रीस्टार्ट होगा you will feel the change here. So as you can see, it is installed, means the command runs successfully, but you need to restart your operating system. So I'm going to restart by using shutdown command, and I hope you remember this, -R-T space 0. That will restart time 0 because I don't want to wait. Just type that, and once it is typed, it will restart, and once it will start, I will show you how it looks like. Oof. Finally चल पड़ा है guys. इस पूरी प्रोसेस में it is almost like, कितना बताऊँ मैं, काफ़ी टाइम लिया है. more than even 1 hour उसने लिया है इसको चलाने में, because उसने मिनिमल जो हमारी सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत सारे GUI से रिलेटेड जितने फीचर्स थे सब डिलीट कर दिया. एंड जस्ट वांट टू शो यू हियर कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने मैंने MMC कमांड चलाया तो उससे MMC भी दिख रहा है, सर्वर मैनेजर भी आपको दिख रहा है, एंड अगर आप देखें तो बैक साइड में उसके एक CMD भी है. तो दैट टू बी ऑल, यू कैन ओनली फाइंड दीज थिंग्स इन दैट. रेस्ट ऑफ अदर काइंड ऑफ GUI स्टफ इज ऑलमोस्ट गॉन. सो दैट्स व्हाट इट इज हियर. तो ये मैं आपको बताना चाहता था. अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं दोबारा से वैसे ही GUI मोड में, तो आपको सिर्फ कमांड वही चलानी है, दैट इंस्टॉल डैश विंडोज फीचर स्पेस server dash GUI dash shell in PowerShell. जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे, वापस से वो आपसे रिस्टार्ट मांगेगा, एंड रिस्टार्ट मांगते ही आप यू विल गेट बैक टू द सेम पोजीशन जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था. सो लेट मी डू वन थिंग. मेरा PC ऑलरेडी काफी स्लो हो गया है, एज यू नो दैट आई एम रनिंग दिस मीन्स Windows Server 2012 ऑन माई मशीन, एंड जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने 2 सर्वर भी दिए हुए हैं इसको. आई मीन टू से 2 सर्वर डेडिकेट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्लो चल रहा है यहाँ पर. तो मैंने अभी एक मिनिमाइज किया. तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि यहाँ पर अगर मुझे वापस चाहिए वो चीज़, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है पूरी स्क्रीन पे, सिर्फ ये सर्वर मैनेजर, MMC और विंडोज़ की जो भी आपकी CMD की स्क्रीन है वही दिख रही है. तो अगर आप दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं फीचर्स को, जस्ट टाइप फर्स्ट we have to go to the PS, or it is called the PowerShell. So type PS here, or you can say the PowerShell. मुझे भी लग रहा है कि Linux कुछ ज़्यादा ही मैंने याद कर लिया, तो I was just trying to always use the short name, but मैं भूल गया कि Windows में ऐसा नहीं चलता है. तो you have to type PowerShell guys, sorry, PS नहीं टाइप करना, the PowerShell. जैसे ही PowerShell टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी PowerShell मोड में आ जाएगा. वहां पर आपको कमांड टाइप करना है इंस्टॉल डैश विंडोज फीचर देन स्पेस सर्वर GUI शेल, एंड डेफिनेटली उसके बाद वो रीस्टार्ट, मतलब वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा एंड आपसे रीस्टार्ट मांगेगा. तो जैसे ही रीस्टार्ट होता है, यू जस्ट गेट बैक योर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट टू बी ऑल. ओह फाइनली मुझे लगा कि आज की डेट में तो आएगा ही नहीं है. Okay, install and then dash Windows feature, and for your information guys, मैंने already type कर दिया है. तो देख लीजिए कि मेरा PC कितना फास्ट हो गया है.
Oh, Microsoft, you are great. At least please type the command so that viewers can see the command here. वैसे मैंने बोल ही दिया है और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है उस कमांड के बारे में, तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन गाइस ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इवन मोर देन माय एक्सपेक्टेशन. So leave that part. So better I repeat one more time the same command. Type install dash Windows feature space server dash GUI dash shell. जैसे आप टाइप करेंगे, just press enter and it will ask you to restart your operating system. Everything is ready and good to go after that. Now guys, we are on the last topic, that is called add and remove features in offline images. Now guys, this is really one of the brilliant feature that I really like in Windows Server 2012, or you can say the mostly, मतलब मैं इसी के बेस पे बहुत सारे हाइपर-वीज को कॉन्फ़िगर करता हूं. ये क्या करता है आपके लिए? इस फीचर के बेस पे आप जो भी हाइपर-वी में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बना रखा है या कोई भी करंट रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, यू कैन ऐड एंड रिमूव विंडोज फीचर उस करंट VSD में. बट मेक श्योर वो VSD ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए. दैट मीन्स वो VSD या ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग मोड में नहीं होना चाहिए. तो आप यू कैन यूज दैट VSD एंड यू कैन मेक चेंजेस इनटू दैट. नाउ हाउ यू कैन परफॉर्म दिस टास्क? So let me show you in the practical. And guys, इस process में भी उसको काफी time लगेगा, तो please hold on. And because the practical is very small for you, because the gap you will not feel, but for me it's very huge. So let's get back to the Windows Server 2012 and let's see how this thing work in Windows Server 2012. For this particular demonstration, as you can see, I am running with Windows Server 2012 full GUI installation edition. And in this one, how you can perform this practical, कि अगर आपकी कोई Hyper-V में machines configured हैं, तो आप उनमें कैसे add and remove roles, मतलब जो भी features और role आप करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे. So first thing I want to tell you here कि मेरे पास दो machine running है, the server core and the full. So first thing first, you have to choose which particular operating system you want to change, and after that you have to perform the task. कैसे करना है? अगर मैं चाहता हूं कि मेरी फुल जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहां पर, उसमें मैं कोई फीचर इंस्टॉल करना चाहता हूं या फिर मैं कोई रोल इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो वो कैसे करूंगा? देन यू कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर ओन सर्वर मैनेजर in full GUI mode. It's really one of the brilliant way you can perform this. Now, how you can do that? So the first thing, you have to go back to your local server, or I mean to say the dashboard is better option. Then click on add and remove, add and role and features. Then click next. यहाँ पर हमने role based और feature based installation option select करना है. Then click next, and यहाँ पर आपको select करना है select a virtual hard drive. Now guys, in Windows Server 2012, this is really one of the advanced feature, you can say, that recently Microsoft has been added in Windows Server 2012, because before that, you know, you cannot perform this kind of task. So यहाँ पर ये option select करके just click on browse. यहाँ पे browse पे click करेंगे. Now it will ask you where is your VHDX file available. So as I know that it is available in my E drive, and my E drive, just go to virtual hard drive, select my VSD hard drive, just open that, and once you open, now just click next. As you can see, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी छोटा लिखा हुआ है, but you can see clearly the destination server is changed now. Now it is changed to this particular location. Where is my VHD available? Just click on next. उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा एंड चेक करेगा कि इस लोकेशन में कौन सी VSD है, एंड उसके साथ साथ वो ये भी चेक करेगा कि कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन से रोल उस पे इंस्टॉल हैं. जैसे ही वो एनालाइजेशन अपनी फिनिश कर लेगा, नाउ ही विल कम बैक एंड हमें वो ऑप्शन देगा कि कौन से रोल या फिर कौन से फीचर्स आप इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो. उसके बाद automatically it will ask you to finish that, and that to be all. Guys, it's really very easy. Wow, great, it is available here. So आप कौन सी चीज उस पे इंस्टॉल करना चाहते हो या कौन सा सर्वर या रोल्स इंस्टॉल करना चाहते हो? In this one I want to install, let's say fax server.
उससे रिलेटेड वो फीचर्स भी इंस्टॉल करना चाहता है, ओके डू इट फॉर मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जैसे ही उसने इंस्टॉल किया जस्ट क्लिक नेक्स्ट। I don't want any other one, just click next again, and once you finish next, print server, great, done, install. That much easy guys, इतना आसान है किसी भी VSG में कॉन्फ़िगर करने का, and that is why in the enterprise location where the servers are available, especially in the Hyper-V, now with the Microsoft integration in Windows Server 2012, it is really one of the greatest feature of Windows Server 2012 that everybody wants to play around. So that to be all, and after that if you start your virtual machine you will get these features installed in that particular machine. So that's it for this particular video. So guys, in this video we just learned that how to enable the remote desktop, then switching installation mode from core to full and 4 to core, and of course we also learned the features on demand and the minimal server interface, including the add and remove features in offline images, especially when you work around with hyper virtualization. So guys, that to be all for right now. If you have any query, any question regarding to this video, you can send me the email on my harshadmin@gmail.com, or you can write down your comment in your YouTube comment box. So that to be all for right now. Have a nice day. Take care. Thank you so much for watching.